Good morning to all my dear students. Welcome to Zoology online class. Actually, I had started the animal tissue. And under animal tissue, I have told you, let me describe in very briefly, that is the total topic which I had taught you. So, tissue is a group of cells having common origin, common development and performing the common function. Clear? And the tissue are differentiated into 4 groups in animals. That is, first is epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue, and fourth is nervous tissue. Clear? And I had started firstly the epithelial tissue. Clear? The epithelial tissue are otherwise called as the surface tissue or the covering tissue, which forms the outer covering of the organs or the body, and the cells which are present or they are arranged very closely to each other, and it also forms or it makes the inner lining of the cavity. They are present on the basement membrane. They have that is the in the epithelial that is the in this tissue the blood vessel and the nerve fibers are absent. It has the high regenerative power, and they have or they originate from, that is the ectoderm, endoderm and mesoderm. Clear? It performs all types of functions: protection, excretion, respiration, reproduction, etc. Everything. Clear? Then it is differentiated into 2 parts. One is the simple epithelium, another is the compound epithelium. Simple epitheliums, which are where the cells are arranged in a single layer. Clear? And in compound epithelium, that is in simple epithelium, the cells are arranged in a single layer just above the basement membrane. In compound epithelium, cells are arranged in more than one layer, that is like this. Clear? And the simple epitheliums are of different types. And under the simple epithelium, I have started, that is the squamous epithelium, where the cells are, that is the flat, thin, medially raised and containing the nucleus at the center, and the margins are very tightly fitted to each other like the mosaic plate of a floor. Clear? So it is called as the pavement epithelium. Then it forms the wavy nature in the endothelium of the blood vessel. So it is called as the tessellated layer. Clear? And this epithelium is present, or it makes the barrier mainly where these substances are interchanged by the process of diffusion, osmosis, etc., which I have told you, that is in the previous class, what is osmosis and what is that is the diffusion, etc. Clear? But I have forgotten to tell one thing. When I have described that the transportation, that is the transportation is of 2 types. One is the active transport and another is the passive transport. Clear? And the passive, under the passive transport, it is of 2 types. One is the diffusion and another is the osmosis. Clear? And which I have, that is the described in details. But I have
forgotten to describe the active transport. In the passive transport, the energy is not necessary for transportation or for exchange of materials from one region to another region. And here, that is the substance moves from higher region to the lower region. Lower region. Clear? But here, it is active transport. Here, that is the energy is necessary to transport, or energy is that is highly essential to transport the materials from one region to another region. And it is the from the lower region to higher region. So, higher region. एठी आमे कौन थिला एठी हायर रो लोअर को जाइथिला तो तमे धर मन कर साइकेल ले चढ़ीच साइकेल तुम उपरे अछ तळु को गड़िबो तेणु पेडल नमाइले भी आपे आपे गड़ी आसीबो लाइक दैट इज द एठी हायर कंसंट्रेशन लु दैट इज द हायर कंसंट्रेशन लु दैट इज द लोअर कंसंट्रेशन को जीवो तेणु एठी एनर्जी दरकार नाही आउ जदि सेमिति एठी परमेएबल मेम्ब्रेन थाउ कि न थाउ जदि खाली खाली चलिला दैट इज सबु जिनिस चलला गैस सॉल्ट आउ सॉल्वेंट सबु यदि जीवा आसिया कला तान इट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन किंतु ऑस्मोसिस रे कोन कहितली केवल सॉल्वेंट जीवो आउ सेठी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन रहिबो आ सेटा भी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को जीवो किंतु एठी कोन हबो एठी लोअर रु हायर को सब्सटेंस ता जीवो दैट इज मन कर तमे साइकेल ले जाउछ तळे माने ग्राउंड लेवल ले जाउछ उठाणी अछि उठाणी ऊपर को जीवो सेठी कोन हबो ना तमे जोर रे पेडल मारिबो दैट इज यू आर दैट इज अप्लाइंग सम एनर्जी लाइक दैट व्हेन द सब्सटेंसेस moves from lower region to the higher region or lower concentration to the higher concentration at that time some energy are required to transfer the substance from lower to higher and that is called as the active transport. I have forgotten to tell these things. Clear? I have narrated that is the or I had narrated all the things in the previous class but I have forgotten to that is the describe the active transport. Active transport is a transport where the energy is necessary to for the exchange of materials from lower to higher concentration from lower concentration to higher concentration. So it is that is the transportation. Then I have started that is the after the squamous epithelium I have told you or I have that is the in the second point or the that is the simple epithelium I have cuboidal or cubical epithelium where the cells are cubical or polygonal in nature with the equal dimension and the nucleus is at the center. Clear? And it is present in the liver, thyroid, etc. Thyroid gland, liver, etc. And that is the proximal convoluted tube PCT and DCT I have told you in the previous class. Clear? So that is it helps in absorption that is the absorption as well as the secretion and that is in excretion. Besides, it also helps to store the substances like the glycogen and that is the metals inside it. So this is the cuboidal. Then the third one I have told you that is the third one that is called as the columnar. That is called as the columnar epithelium. Here the cells are elongated and that is the elongated or tall that is where the free end is wider than the narrow end and the nucleus is towards the basal region and remain in one plane and the nucleus are more or less they are elongated. Clear? They remain in one plane and they lives only 2 to 3 days. They are replaced by the new cells. Then that is the here that is it present I have told you
That is many times that at the time of writing the tissue, you have to mention three things at least. What is the shape or what is the structure of the cells of this type of tissue, and the second one, where they are present or where it is present, and the third one, what is its function. It is present from, that is the stomach to rectum, stomach to rectum, that is elementary canal. There is a stomach, stomach to rectum पर्यंत एटा थिबो. आउ intestine रे, in case of intestine, it forms the microvilli. एटा जो लुचा कुचा हो जीवो, this is called as the microvilli, जहाँ surface area बढ़ी जीवो. Surface area बढ़ी गले absorption अधिका हबो, हला. तो these are called as the microvilli. These are called as microvilli. Clear? So, and that is this are the main function होची कौन? Now it secretes the digestive enzymes as well as that is it helps in absorption. It's the main secretes, that is the function is, that is the secretion as well as absorption. Then the fourth category I have told you, that is ciliated epithelium. Ciliated epithelium. In case of the ciliated epithelium, they are, that is the cells are either columnar or cuboidal, having the cilia at their free margin. And that is this type of, that is the cells are, that is of two types depending upon the nature of the cilia. If the cilia are movable and they originate from the basal granules root-like structure called as the basal granule, then it is called as, that is the kinocilia. Kinocilia. If the cilia are not, that is they have no, that is the basal granule, and they are immovable, and they are called as the stereocilia. Stereocilia. And the kinocilia are present in the trachea, oviduct, etc. And the stereocilia is present in the male genital tract. Clear? Then today let me start, that is in detail, that is about the glandular epithelium. That is the number 5th, that is called as the glandular epithelium. The glandular epithelium. That is the glandular epithelium. What is the meaning of a gland? So first of all, what is the meaning of gland? The glands are, either it may be the cell or it may be that is the tissue, then, but they have the capacity to secrete some chemical substance. जो सेल हो किंबा टिश्यू हो किंबा गोटे ऑर्गन हो, जदि सेटा किछि केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट कला ताले आमे ताको ग्लैंड बोली कहिबा, हला ताको आमे ग्लैंड बोली कहिबा. So that is the glandular epithelium are nothing but they are that is some of the columnar epithelial cells are modified to forms the gland cells or the glandular epithelium. Some of the columnar epitheliums are modified to forms the glandular epithelium. Glandular epithelium. Clear? These cells are large in size. These cells are large in size. तामाने some columnar epithelials modified to forms the glandular epithelium, where these cells are large in size with the presence of a granule in its cytoplasm. The cells are large in size with the presence of that is secretory granules in its cytoplasm, and these granules are called as the zymogen granules. These granules are called as the zymogen granules. Clear? Are you understanding me or not? That is, the glandular epitheliums are nothing but the modification of some columnar epithelium, where
the cells are large in size with the granules in its cytoplasm, and these granules are secretive in nature, and these granules are called as the zymogen granules. बुझेला जो किछि columnar epithelial cell रू रूपांतरित है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड क्या कहवा ना जो सेल माने जो टिश्यू माने किछि केमिकल सब्सटेंस झरेबे से मान को कहगला ग्लैंड सेल बा ग्लैंड टिश्यू बा गोटे ग्लैंड। क्लियर? सेल रु टिश्यू, टिश्यू रु ऑर्गन हला, तो सेटा को हमें कहवा गोटे ग्लैंड बोली हला। तो सम ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स are modified to forms the glandular epithelium, where जोटी सेल गुड़ाक बड़ हो साइटोप्लाज्म रे किछि दाना दाना सब्सटेंस देखा जीवो, ग्रान्यूल देखा जीवो, से गुड़ा कहला जाइमोजेन ग्रान्यूल्स। क्लियर? कहूची जे दिस इज द ग्लैंडुलर सेल। जदि गोटे ग्लैंड हम सेटा कौन हम ना दी बाय द फोल्डिंग ऑफ द एपिथेलियम, by the folding of the glandular epithelium. So this is the columnar epithelium. Here this forms the glands. If it is that is folded, जदि भितर को एमती पशि आसीबो ताने एटी कोन हबो ना एमती गोटे स्ट्रक्चर हबो। ए स्ट्रक्चर टा कहगला ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंड। क्लियर? सो द होल स्ट्रक्चर इज ग्लैंड। तेणु ये कौन है ये जो एपिथेलियल टिश्यूटा एमती भितर को फोल्डिंग होगा बा एमती भितर को पशि आसला, दैट इज कॉल्ड एज द इनभाजिनेशन। सो एटी सबू सेल माने सिक्रेट करेंगे एटा ए ऑर्गन होगा गोटे ग्लैंड। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंडुलर। देन द ग्लैंड सेल्स secretes either protein or a lipid or that is the protein plus carbohydrates, protein and carbohydrate, or the combination of all protein, carbohydrate and fat. That is the mammary gland of the mammals. Mammal manakara ए जो स्तन्य ता भितर सब प्रकार झरुची. It is also a gland. It is made up of the glandular epithelium. Are you understanding me or not? Mammary gland ता माने breast टा हला ए breast रो सब प्रकार सब्सटेंस झरुची, प्रोटीन भी झरुची। गोटे पिलाटा खाऊची तार खाद्य प्रोटीन दरकार, ता खाद्य लिपिड दरकार, ता खाद्य कार्बोहाइड्रेट दरकार। तेणु गोटे छुआपाई तार मिल्कटा सबु प्रकार खाद्य से बहन करची। सो दी मामारी ग्लैंड है, ये मामारी ग्लैंडटा भी ये जो कॉलमनार एपिथेलियल सेल डेवलप होगी एमती ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। आउ द ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी और नॉट? The glandular epitheliums are nothing but the modification of some of the columnar cells, where the cells are large and contains that is the granules in its cytoplasm, that is called as the zymogen granules. Clear? When the glandular epithelium is folded, it forms the gland. When the glandular epithelium is folded, then it forms the gland, and it secretes either the protein or the lipid or the combination of carbohydrate plus protein or the combination of all, that is carbohydrate, protein or and fat. Clear? And the glands are of two types. That is the glandular epitheliums are of two types. One is unicellular, another is multicellular. That is the glands are of two types. That is the glands are of two types. That is the one is unicellular. Unicellular माने जोटा गुटिया सेल तैयारी, and this is called as the multicellular. Multicellular, which is formed by a large number of cells. Unicellular, that is unicellular glands are present in the that is the given the figure of like this in the एटी आगे फिगरटा काटी थी। So these are the columnar cell, and एटी गोटे सेल कौन है ना मॉडिफिकेशन है बाटे से सिक्रेशन करिवो हला, ए बाटे से सिक्रेट करिवो, and this is called as the goblet cell. Goblet cells
गोबलेट सेल इन दी दैट इज द इंटेस्टाइन बा स्टोमाक रे बा एलिमेंट्री कैनाल एमती गोटे गोटे सेल अच्छी कॉलमनार एपिथेलियम टोटाल एलिमेंट्री कैनाल रे एमती कॉलमनार एपिथेलियम अच्छी ता भीतर एमती गोटे गोटे अच्छी ये कौन सिक्रेट करछि ना ये मियोसिन सिक्रेट करछि ये कौन सिक्रेट करछि ना मियोसिन मियोसिनटा जतले वाटर संस्पर्श रे आसीबो एटा कौन हे जिवो ना म्यूकस लाळ हे जिवो एटा लाळुआ है कि एलिमेंट्री कैनालटा भीतरटा एमती इनर लाइनिंग लाळुआ है कि रहिबो खाद्यटा सहजरे खसिरिबो आउ सहजरे पास करि परिबो हला आ प्रोटेक्टिव इन नेचर तेणु एटी यूनिसेलुलार ग्लैंड आउरी कोटी अछि ना माछर स्किन रे अछि यूनिसेलुलार ग्लैंड तार जो स्किन अछि ए जे माछर जो स्किन अछि से स्किन रे यूनिसेलुलार ग्लैंड ऊपर लेयर अछि आ से कोन सिक्रेट करछि ना मियोसिन सिक्रेट करछि मियोसिन जतरा पानी रे लागुछि लाळुआ लागुछि तेणु माछटा को आमे धइले लाळा लाळा लागिवो एटा होछि प्रोटेक्टिव इन नेचर हला तो एटा हला यूनिसेलुलार आ यूनिसेलुलार जो गोटे गोटे सेल रही ताकू कहती गोबलेट सेल ताकू कहती गोबलेट सेल दैट इज द यूनिसेलुलार दीज आर द कंपोज्ड ऑफ आइसोलेटेड एगुड़ा किमती आइसोलेटेड गोटे सेपरेट होइकि थिबे गोटे 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 गोटिया कॉलमनार एपिथेलियम उपरे बा कॉलमनार बा एपिथेलियल सरफेस रे एमिति गुटिए गुटिए माने थिबे हला आउ एगुड़ा केइटी अछि ना स्किन रे ऑफ दैट इज द फिश रो स्किन रे अछि आउ आमर इंटेस्टाइन रो जो इनर लेयर म्यूकस लेयर एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन या धेरे एमिति गोटे गोटे सेल रही ताकू कहती गोबलेट सेल हला गोबलेट सेल आउ ये कौन सिक्रेट करिवो ना मियोसिन सिक्रेट करिवो मियोसिन सहित जतरा वाटर लागिवो सेटा हे जिवो म्यूकस लाळुआ हला सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिसेलुलार ग्लैंड देन यू कम टू द मल्टीसेलुलार ग्लैंड मल्टीसेलुलार ग्लैंड कौन है ना मल्टीसेलुलार ग्लैंड होची एटा गुडाए सेल द्वारा तैयारी दैट इज द मल्टीसेलुलार ग्लैंड ए मल्टीसेलुलार ग्लैंडटा तारो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप और स्ट्रक्चर मोड ऑफ सिक्रेशन containing whether it contains the duct or not duct माने नाड़ जोटा कैनालटा अच्छी सेटा अच्छी ना नहीं से अनुसार एटा को विभिन्न प्रकार रे भाग कराई सो दैट इज द मल्टीसेलुलार ग्लैंड दैट इज द मल्टीसेलुलार ग्लैंड that is multicellular gland depending it is differentiated into three parts depending upon the shape of the glands that is the depending upon the shape of the plant that is the shape of the plant shape अनुसार ताको तीन भाग रे विभक्त कराई छै कोन है ना one is tubular another is alveolar another होची acinous राउंडेड एसिनस एमती तीन प्रकार सेल अच्छी दैट इज द ट्यूबुलार अल्वेओलार एंड एसिनस एग्जांपल देले जानि परिबो ए ट्यूबुलारटा माने एमती ट्यूब भलिया हितबो दिस इज ए ट्यूब हला ए ट्यूब भलिया हितबो तार इनर रे सब किए थिबो ना एपिथेलियल ग्लैंडुलार सेल ओडा थिबो एंड इट इज टोटली इट इज कॉल्ड एज ए ग्लैंड हला एटी मु कौन कही प्रथम रू ना मन कर दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू एंड सम ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर कॉलमनार एंड इट हैज बीन मॉडिफाइड टू द ग्लैंड सेल मन कर ये ग्लैंड सेलटा एटा एमती इनभाजिनेशन हो गला इनभाजिनेशन हेले कौन हम या भितर पटे एमती सेल गुड़ा रहिबो ए जो सेल गुड़ा रहिला एंड इट फॉर्म्स ए टोटली इट फॉर्म्स ए ग्लैंड एंड इट शेप इज ए ट्यूबुलार एटा ट्यूब भलिया आइछि तेणु इट इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलार gland it is called as the tubular gland a tubular gland is of three types तार पुणी एटा तीन प्रकार रही कौन है ना गोटे हूँ simple that is simple tubular and another is the compound tubular and another is the coiled tubular so it is the simple tubular here that is the gland is like this the gland is like this is simple tubular clear this is simple tubular and the secretion like this and it is found eta कोउट देखा जिवो ना in intestine of the alimentary canal eta देखा जिवो example होची केटी ना intestine of it is that is the example is intestine of the alimentary canal clear
Then what is the compound? You see here. এটা টিউবুলার কিন্তু এটি ব্রাঞ্চ হয়েছে। দিস ইজ কম্পাউন্ড হলা। এটা কেটি দেখা হব না ইট ইজ ফাউন্ড ইন দি গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড। স্টোমাকরে যে গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড ଅଛି বা স্টোমাকরে যে গ্ল্যান্ড গুড়া তা কহନ୍ତି গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড। দিস ইজ কল্ড এজ দি গ্যাস্ট্রিক গ্ল্যান্ড। Gastric gland of the alimentary canal, and the coiled tubular like this. This is the gland is like this. It is coiled in nature. एमती मुड़ी जाइथिबो, and this type of epithelium is or coiled gland is present in the sweet gland. Sweet gland, you know, jhala granthi, that is called as the sweet gland. Example is sweet gland. Clear? This is all about the simple tubular. This is called as the tubular, that is the glandular or the glandular epithelium, which is a tubular in shape. That is the simple, compound and coiled. Simple is found in intestine. Compound, that is where it is much more branched and it is found in the stomach, so it is called as the gastric gland. And in the sweet, where that is it is somewhat coiled in nature, it is found in, that is the sweet gland of the mammals. Clear? Jhala granthi. So this is all about the tubular gland. Clear? Then you come to the alveolar. Alveolar, tome lungs पढ़िनो, lungs पढ़िले तमे जानो तो what is alveolar. So this is the, it is again of two types. One is simple, another is the compound. Simple and that is the compound. Simple, you know, if it is single, it is simple. If it is more than one, then it is compound. So here, like this, alveolar, empty swelling heitho. Hala? And this type of, it is a simple type of, it is found in, that is the, it is found in the, that is the sebaceous gland of the mammal, skin of the mammal, sebaceous gland. Another is the, that is the Bowman's gland, that is the, it is akhire achi. So it is, you should remember that in the skin, that is called as the sebaceous gland. It is a simple alveolar. Then compound alveolar, like this. This is compound alveolar. The compound alveolar is the mammary gland of the mammal. Is the breast, jo gland achi, this is the mammary gland of the mammals. This is called as the compound, that is the glands, that is the compound alveolar glands. This is called as the compound alveolar gland. This is found in the mammary glands of the mammals. That is the mammary gland of the mammals. Then you come to the third categories. Then you come to the third categories. Third categories is the acinus. Acinus means simply it is rounded. It is of two types. One is simple, another is the compound. One is simple, another is compound. In this simple, that is the secretory unit are, that is the unbranched, and it is simple circular type. It is simply circular type. It is the single and rounded sac-like or circular rounded sac-like. In compound, and it is found in the skin of the frog. It is found in the skin of frog. And here in case of the compound, here the secretory units are many, and here they are simple and rounded. It is found in your pancreas, liver, etc. Clear? Pancreas of the mammal, mainly pancreas of the mammal, that is called as the compound acinus. Clear?
So this is all about the, I have told you, that is the glands, that is the multicellular glands, unicellular gland and multicellular gland. Unicellular glands are present scatteredly, तामाने विच्छिन्न भाव में थिबो, एठी गुटे थिबो in the columnar epithelium, and mostly they are present in the skin of the fish and the inner lining of the intestinal wall. Intestinal wall la eटा रहिबो, and these are called as the mucus, that is the goblet cell, and these cells secrete the chemical substance called as the mucin. When the mucin comes in contact with water, it converts into slippery structure called as the mucus. Or then you come to the multicellular glands. Here it is made up of a large number of gland cells. It is of different types and it is present in the deeper region of the body. It is not found superficially. Clear? कहीं ना एटा फोल्डिंग होइछि, एपिथेलियल टिश्यूटा भितर को पसि जाइछि बा ग्लैंडुलर टिश्यूटा एटी भितर को पसि जाइछि टू फॉर्म्स द ग्लैंड. सो इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द शेप, नेचर ऑफ दैट इज द सिक्रेशन, presence of absence of the duct, like this. Clear? So multicellular gland, depending upon the shape, it is of three types. One is tubular, another is the alveolar, and another is the acinous. The that is the tubular is of three types: simple, compound, and that is the coiled. Then alveolar is two types, one is simple and compound, and acinous is of two types, one is simple and compound. So I have already given the examples where they are present. Clear? And you know the function of them, that is only to secrete the glands or the enzymes or the hormones or the waters or the mucus, etc. Then you come to the basing upon the mode of secretion. Basing upon the mode of secretion, ସେମାନେ କେମିତି secrete କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବାଟେ secrete କରୁଛନ୍ତି, they are the cell, but how they are secreting, କେମିତି ସେମାନେ ଝରଉଛନ୍ତି. So this is the mode of secretion. On mode of secretion ଅନୁସାରେ that is the ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି. Mode of secretion, mode of secretion, they are divided mainly into three types, that is depending upon the mode of secretion. Mode of secretion, that is the mode of secretions is of three types. One is epicrine or merocrine, or it is called as the merocrine. That is the epicrine or merocrine. Then another is apocrine, and another is holocrine. There are three types. One is epicrine, another is apocrine, and another is holocrine. Clear? In case of the epicrine, suppose this is the gland which secretes their secretion into its cavity, or suppose it is a single cell. Clear? It secretes the gland. कौन secrete करिवो? The chemical substance, either it is enzyme or the hormones or anything else, water, etc. anything else. जेटा secretion कला एट धर तार सब preparation हला. से preparation टा बाहर को body रो भीतर को किमिति आसीवो, अन्य part को किमिति जीवो हला. That is epicrine. Here the glands or the cell discharge their secretion. ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର secretion ଟା simply by the process of diffusion or osmosis, etc. into the outside of the gland. Into the secretion by the diffusion or osmosis or something else द्वारा एटी secretion टा बाहर को पळे आसीबो हला. गुटे सेल हो किंबा गुटे ग्लैंड हो जदि तार secretion टा तार झरेवाटा आ भितर तयारी हला, सेटा simply सेल रो बाहर को चली आसीबो without that damage of any part of the
और बा ग्लांड किसी क्षति न होइकी बा किसी नष्ट न होइकी तार कौन हम ना सिक्रेशनटा तार बाहर को आपे आपे आसीबो हला बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और दैट इज द ऑस्मोसिस और एनीथिंग एल्स दैट टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज द एपिक्राइन ग्लैंड एपिक्राइन ग्लैंड गुड़ा किए किए ना स्वीट ग्लैंड झाड़ ग्रंथि सेलिभारी ग्लैंड पार्टी जोटा बाहरुची हला एंड गोबलेट ग्लैंड ये जो तुमको कहली स्नेक ये जो आमर सिंगल ग्लैंड दिस इज सिक्रेट द मियोसिन क्लियर ए मियोसिनटा आपे आपे बाहर को पलि आसो कौन सी तार माने सेल रो किंबा ग्लैंड रो कौन सी क्षति न होई कि आपे आपे सेटा झरिकी बाहरी आसो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और दैट इज द ऑस्मोसिस और समथिंग एल्स जहाँ भी हो है तो यहाँ कहगला इपिक्राइन ताने आपे आपे बाहरी आसो तार सेल किंबा ग्लैंड रो कौन क्षति हम ना बा कौन नष्ट हम ना देन यू कम टू द एपोक्राइन कौन ना ये ग्लैंड गोटे यूनिसेलुलर ग्लैंड हो पारे कि जो कौन ग्लैंड हो पारे तार अगटा ये डैमेज हम तार अगटा ये बाटे डैमेज हम से यही बाटे सिक्रेशन करिवो से जोटा ग्लैंड भितर एटा झरेला जो तार सब्सटेंस गुड़ा झरला से अग देकर बाहर को आसो दैट इज द मामारी एग्जांपल होची मामारी ग्लैंड आमर स्तन्य ये स्तन्यर कौन होता है ना एमती सब डक्ट लगी डक्ट देहरे गुड़ाए सब ब्रांच हो से ब्रांच देहर सब डक्ट एगुड़ा सब लगी से बाटे सब तार अगटा एमती लगी ए बाटे सिक्रेशन हो ये बाटे झरी झरिकी आसिक ए बाटे मिल्क देकी बाहर है तो यहाँ हूँ एपोक्राइन ग्लैंड तमाने तार एपिकल पार्टा डैमेज हम बा एटा रप्चर हम रप्चर होगी बाटे सिक्रेशन हम दैट इज कॉल्ड एज दी एपोक्राइन ग्लैंड्स होलोक्राइन ग्लैंड दैट इज होलोक्राइन ग्लैंड हूँ एठी जो ग्लैंड भितर तार सब्सटेंसटा भर्ती हो ग्लैंड सेल भितर तार सब्सटेंसटा जो भर्ती हो फाटिजिवो फाटिकी एटा पूरा डैमेज हो डैमेज होगी सब्सटेंस गुड़ा कौन कर अलग पार्ट को देदेव है इट इज टोटाली बस्ट एंड डिस्चार्जेस इट्स सिक्रेशन टू द आउटसाइड ऑफ द ग्लैंड बाहर को से दब दिस इज कॉल्ड एज द होलोक्राइन ग्लैंड एगुड़ाक किए ना एगुड़ा हूँ सेबासियस ग्लैंड एगुड़ा हूँ सेबासियस ग्लैंड आम बॉडी रे मेनली स्वीट ग्लैंड आउ सेबासियस ग्लैंड अच्छी स्किन रे स्वीट ग्लैंडटा झाड़ ग्रंथि सेबासियस ग्लैंडटा सेबम बोली गोटे ऑयली सिक्रेशन करे जो ऑयलीटा आम बॉडीटा को तेलिया तेलिया रखे है से सेबासियस ग्लैंड गुड़ाक तुम बॉडी रे बेसी अच्छी तेणु तुम बॉडीटा चिक मारुची तेणु मो बॉडी रे कौन है ना बयस हवा जुगु एगुड़ाक आउ एते जेनेरेट हो नहीं है बयस हवा सहित ए सेल मानकर जेनेरेशन कमीगला तेणु मोर स्किनटा रफ देखा है सो दिस इज द सेबासियस ग्लैंड आर that is in the category of holocrine, that is epicrine, apocrine and holocrine. Depending upon the nature of mode of secretion, there are three types. Epicrine एटा डिफ्यूजन ले आसीबो कोनोसी डैमेज हबो नाही सेल किंबा टिश्यू रो एपोक्राइन ता अग कटिकी आसीबो एंड होलोक्राइन सेलटा पूरा नष्ट हो जिवो पुनी ता जगह रे आ गुटा सेल बा आ गुटे ग्लैंड सेल तयारी हबो हला सो दिस इज that is the mode of secretion. Then we come to the nature of secretion. Nature of secretion किमिति से secrete करूची की प्रकार nature से secrete करूची की प्रकार gland हेतिबो that is the nature of secretion. That is the mode of secretion. Then you come to the nature of secretion. Nature of secretion माने सेटा पानिया पानिया secrete करूची ना बहलिया secrete करूची ना दीटार मझी मझी का secrete करूची तेणु एटा को तीन प्रकार कराइची कौन कौन कराइची ना गोटे होची serous gland, that is the serous gland जे पूरा पानी भलिया secrete करिवो and another is the mucous gland जे बहलिया secrete करिवो that is the mucous gland and another is that is the mixed gland ता माने एटी ग्लैंड ता तीन प्रकार है either it is serous gland or that is called as the mucous gland or it is called as the mixed gland. Serous gland means it will secrete the water like substances. एटा कोटी पूरा पानी भलिया एटा होची स्वीट ग्लैंड झाड़ा ग्रंथि स्वीट ग्लैंड as well as the intestinal gland. एन जो intestine अच्छी ता भीतर जो secretion होची that is also that is the serous gland, intestinal gland. Then you come to the mucous gland. Mucous gland माने बहलिया that is a slimy
that is the it secretes the slime, that is the fluid, dense slime fluid, बहलिया भलिया mucus secrete करिवो एटा केइटी ना goblet sac and gastric gland stomach रु जोटा बाहरुची, that is gastric gland, and that is the mucus gland. म्यूकस ग्लांड कोटी ना इंटेस्ट ए जो आमर दैट इज द स्किन ऊपर रही म्यूकस ग्लांड कहार ये जो गोबलेट सेल गुड़ा जो रही कहार फिश रहा एटा हूँ गैस्ट्रिक ग्लांड एंड म्यूकस ग्लांड हूँ स्किन रो जो अच्छी गोबलेट सेल, दैट इज कॉल्ड एज द गोबलेट सेल. गोबलेट सेल एगुड़ा सिक्रेट करेंगे म्यूकस माने बहलिया डेंसी, दैट इज द स्लाइम फ्लूइड, डेंसी स्लाइम फ्लूइड. मिक्सड कौन ना बेसी बहलिया नुहे कि बेसी पानिया नुहे, दैट इज कॉल्ड एज दी सेलिभारी. ये जो पार्टी जो लाड़ बाहर सेलिभारी ग्लांड, दैट इज नो नॉट मोर स्लाइमी और नॉट मोर वाटरी, दैट इज कॉल्ड एज द पेनक्रियास सेलिभारी, दे आर द मिक्सड ग्लांड. क्लियर? सो दिस इज द नेचर ऑफ सिक्रेशन. दि फास्टा कौन गला मोड ऑफ सिक्रेशन, केमिति से झरौचंती. दिस इज द नेचर ऑफ सिक्रेशन, को प्रकार झरैले आउ गोटे आम पढ़ा, दैट इज बेस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डक्ट, बेस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डक्ट, बेस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डक्ट. डक्ट बुझीपारछ, डक्ट माने नाड़, बेस्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डक्ट, डक्ट DUCT. मनकर एटा लिभर, मनकर एटा लिभर रु एमती सब हेपाटिक डक्ट बाहर थी, ये गोटे सिस्टिक डक्ट गल ब्लडर लगी, यहाँ हूँ बाइल डक्ट, ये पेनक्रियाटिक डक्ट मिसिक यहाँ हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट. क्लियर? पेनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट माने जो कैनाल लाइक जो बाटे झरुची, दैट इज कॉल्ड एज द डक्ट. क्लियर? ये बाटे नाड़, दैट इज द डक्ट. क्लियर? तेणु व्हेदर द डक्ट इज प्रेजेंट और नॉट, ये अनुसार ग्लैंड रो डक्ट अच्छी ना नहीं, तेणु से अनुसार ए लिभर गोटे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लिभर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. तेणु लिभर जो लार्जेस्ट ग्लैंड हला, तेणु से कौ बाटे तार ग्लैंडर काम हो कौन ना टू सिक्रेट्स दी फ्लूइड बा टू सिक्रेट दी केमिकल सब्सटेंस, से केमिकल सब्सटेंसटा केमिति कौ बाटे सिक्रेशन करछि, व्हेदर इट इज थ्रू दी डक्ट और इनटू द डायरेक्ट इनटू द ब्लड. ए अनुसार एमान को तीन भाग रे विभक्त कराई छि. कोन कोन भाग कराई छि ना गोटे होछि एक्सोक्राइन, गोटे होछि एक्सोक्राइन, आ गोटे होछि एंडोक्राइन, and another is heterocrine. One is exocrine, exo means outside, crine means se कांदुची हला. एटी ग्लैंड कौन करछि ना जोटी डक्ट अच्छी प्लस डक्ट, हियर इट इज विथ डक्ट, द ग्लैंड which secretes their secretion through the duct, they are called as the exocrine. जो माने ताकर सिक्रेशन टाक डक्ट साहाय्य झरौचंती से माने एक्सोक्राइन. लिभर, सेलिभारी ग्लैंड, क्लियर, दे आर कॉल्ड एज द पेनक्रियास, दे आर कॉल्ड एज द एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन, that is the gland which secretes their secretion directly into the blood, no, that is not blood, that is no duct, there is no duct, आंकर डक्ट नहीं, एमाने जहाँ सिक्रेट करेंगे डायरेक्ट तंकर ब्लड को पळेबो, एंड दे आर कॉल्ड एज द एंडोक्राइन. योर पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, these are the endocrine gland. Another is heterocrine, that is both exo and endo is equal to hetero. जदि गोटे ग्लैंड रे सेटा बिहेव करथुवा एक्सोक्राइन भलिया प्लस एंडोक्राइन भलिया, किछि पोर्शन सिक्रेट होथुवा डक्ट रे, किछि पोर्शन सिक्रेट हो नथुवा डक्ट रे. तेणु बोथ एक्सो एंड एंडो दे आर कॉल्ड एज द हेटेरोक्राइन. एंड एग्जांपल इज पेनक्रियास, एग्जांपल इज पेनक्रियास. पेनक्रियासटा गोटे ग्लैंड जोटा एलिमेंटरी कैनाल लगी, लिभर तलू को अच्छी है, डिओडिनम मझे अच्छी, तेणु से हेटेरोक्राइन ग्लैंड. दैट इज द हेटेरोक्राइन होची हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. किछि पोर्शन ग्लैंड डक्ट रे झरुची, आउ किछि पोर्शन डायरेक्ट ब्लड को जाउची, सेमानकर डक्ट
secretion टा डायरेक्ट ब्लड को जाउछि सेमानकर डक्ट नाही clear then you come to the this is all about the that is the glandular epithelium. The glandular epithelium is the large structure and it has so many that is the branches. So you come to the sensory epithelium. You come to the second category that is called as the sensory epithelium. The number 6th probably that is the sensory epithelium. What is sensory epithelium? The sensory epithelium are nothing but they are also the modification of the columnar epithelium. So these are the columnar epithelium. Some of the columnar epitheliums are modified to form the sensory epithelium. Sensory epithelium. They may be present in singly or they may present in group. They present in group. This is sensory epithelium. एटा ता माने sensory epithelium कौन ना these epithelial cells are the modified form of some of the columnar epithelium. Columnar epithelium. They occurs either singly or in group. They occurs either singly or in group. एटी कौन है सेल्स आर इलोंगेटेड लंबा है ऊपर गोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी दैट इज कॉल्ड एज द सेंसोरी हेयर. सेंसोरी हेयर आउ तलपटे किए लगी सेंसोरी नार्व्स. दिस इज कॉल्ड एज द सेंसोरी नार्व है दी एडी कौन कहूँ सी ना सम ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म्स the some of the columnar epithelial cells are modified to form the sensory epithelium. Where the cells are elongated, where they may be present singly or in group. Here the cells are elongated. The cells are elongated and bear the sensory hair at their free end. And connected with the sensory nerve fibers in their inner region. So that is they are present where they are present in the internal ear, in the nasal chamber, in the tongue, in the sense organ. These are present and our main function they received the stimuli of a different that is the kinds. एमाने different kinds रा stimuli बा उद्दीपना ग्रहण करिवे. तो कान ग्रहण करिवो sound stimuli and that is the आखि ग्रहण करिवो light stimuli. So that is the different they are present in the different sensory organs like the tongue, ear, eyes, etc. Clear? So these are the sensory epithelium. Sensory epithelium, let me repeat again. The sensory epitheliums are nothing but they are the modified form of the columnar epithelium where the cells are either arranged in present in singly or in group. Clear? The cells are elongated having the sensory hair at their free end and that is the sensory nerve in their inner end. Clear? Or inner margin. And they are present in the tongue, eyes, ear, nose, inner lining of the nose, etc. And its main function to receive the different stimuli, but different kinds of stimuli. Then you come to the germinal epithelium. Number 7. Then you come to the germinal epithelium. Number 7. Germinal epithelium. So in our body there are two types of cell. One is a somatic cell, another is the germ cell. Clear? Cells साधारणतः दो प्रकार गोटे जनन कोश आ गोटे सौम्य कोश cells.
hela, that is the germ cell, and in this there is the somatic cell. Somatic, or you can say body cell, body cells. Clear? Germ cells kiye? Sperm and ovum. The sperm and ovum, शुक्राणु आउ डिंबाणु, and ovum are the germ cell, and they are haploid in nature. से माने n, ता माने 23, आमर जे 46 टा 2 गुणन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एठी आमर समस्त करथिबे केते ना 23 सेति पय स्पर्म आनिबो 23, ओभम आनिबो 23, ये 23 जुड़िले हबो 46, एटा हबो जाइगोट, एटा हबो जाइगोट, समान हेले जाइगोट हबो. क्लियर? सोमाटिक सेल आमर जे कोनसी सेल नेले सोमाटिक सेल, एटा को बॉडी रे जे कोनसी सेल को नेले सोमाटिक सेल, एटा होची 2n, दैट इज कॉल्ड एज दी, एटी 46 क्रोमोसोम थिबो सब सेल रे. एठी जोटू नेले हबो, किंतु एटा केउटू स्पर्म आ ओभम. स्पर्म टा केउटू तयारी हबो ना टेस्टिस रु, ओभम टा केउटू तयारी हबो ना ओभारी रु. हला ओभारी रु एटा अंडकोश, दैट इज द अंडकोशाला टेस्टिस रु स्पर्म तयारी हबो, आ ओभारी दैट इज द ओभारी जो फीमेल मानकर बॉडी भितरे अछि ता देहरु तयारी हबो ओभम. हला तो दी प्रकार सेल, जर्म सेल आ सोमाटिक सेल. तेणु ए टेस्टिस भितरे आ ओभारी भितरे किछि जर्मिनाल एपिथेलियम सेल अछि. हला ता भितरे कैविटी भलिया स्ट्रक्चर अछि. टेस्टिस हेले एमती सब राउंडेड स्ट्रक्चर अछि, ता कोनती सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ता भितरे गुटे लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू अछि, कारण एटा गुटे कैविटी, ए कैविटी रो लाइनिंग करछि, आ एटा होछि ओभारी, ओभारी रो लाइनिंग करछि. या भितरे जो कैविटी, या भितरे जो सेल गुडा अछंती, ए गुडा कहला जर्मिनाल एपिथेलियम. ए जर्मिनाल एपिथेलियम रु किए तयारी हबो ना द जर्म सेल, स्पर्म आ ओभम तयारी हबो बाय द प्रोसेस is called as the gametogenesis. गैमेट जो तयारी हबो बा स्पर्माटोजेनेसिस बा ओवोजेनेसिस, स्पर्म तयारी हबो, ओवोजेनेसिस से ओवम तयारी हबो. तेणु ए सेल गुडा केमिति ना दे आर मोर और लेस cubical, they are more or less cubical in nature. Clear? And they are present in cubical and nucleated, and they are present in the either in the testis as well as in ovary. So what is its function? The function is to, that is it has the that is the cell division capacity or cell dividing capacity. They divides by the process of meiosis and mitosis and produces the sperm and ovum. शुक्राणु और डिंबाणु तैयार करते. They are called as the germinal epithelium. एमाने किमिति ना एमाने क्यूबिकल कोटी अछंती ना टेस्टिस आ ओभारी रे अछंती. टेस्टिस होची मेल रो, फीमेल होची ओभारी. that is मेल होची टेस्टिस, फीमेल होची ओभारी. that is the so let me finish today with this, because from the now it is 12 o'clock, and from now the second year class will begin. So I have to take the second year class. So from this I will, that is, teach you in the next class. Thank you to all.